India, those who are economists, academics, observers, well-meaning observers, we must recognize the complexity of these challenges. And part of the complexity comes from the fact that India is now unraveling what are very deep legacies that go back to the earliest pre-independence years, and in some instances, go back to the colonial era. A legacy of economic thinking and strategies that from the earliest years of independence relied on state control of the economy and complex and frequently changing regulation. Very strong legacy, which has not disappeared from India. A legacy of preference for capital-intensive industry rather than labor-intensive industry, and inadequate attention paid to job creation. A legacy going back to the pre-independence years of letting people live with very low incomes in the rural areas for all their lives, rather than finding ways to reform and allow people to be freed up to move into more productive activity. And a legacy of neglect, again going back to the pre-independence years, neglect of basic education and healthcare for a large part of the population. Of course, a legacy of unequal treatment of girls and women as well. Each of these is now being unraveled. It takes time. It's not just one or two policies. It will take missionary zeal, but there's urgency now in moving faster. India needs this urgency. It requires much higher growth and much deeper inclusivity, and the two go together. You cannot sustain high growth for 25 years, let alone 40 years, without much deeper inclusivity, and you cannot achieve inclusivity without higher growth. As RAjkot put it in 2017, he asked the question, how do you fight poverty? And as he put it, you need a high level of growth. Growth brings in resources, and the policies of the state have to be aimed at achieving a high level of growth. It's absolutely necessary to tackle poverty and achieve inclusivity. But he also asked, will growth itself address or remove poverty? No, growth itself doesn't. You also need social activism, putting the poor at the forefront of thinking, of public consciousness, of policy, putting the poor at the forefront. And again, I know that Prime Minister Modi has been talking about this very recently. I will talk briefly about growth and jobs, and then I will talk about inclusivity. And I will not cover the ground comprehensively in the interest of time, but let me first say that India is not going to be able to achieve its economic or social ambitions in the next 25 years without substantially higher growth ambition. India must grow by at least 8 to 10% over the next 25 years, 8 to 10% a year. It is the only way in which it is going to be able to both lift average incomes and per capita income, as well as create many more jobs. To do both at the same time, to lift per capita income significantly, and to create many more jobs for a large young population, you need higher growth. And 8 to 10% is the minimum that has to be achieved in the next 25 years. We've seen in many developed economies, and even in China in the last 10 years, a situation where productivity is achieved at the expense of jobs. In fact, the employment rate in many developed countries has come down in the last 10 years. It has also come down in China. China has sustained high productivity growth, but the employment rate has come down. India does not have that luxury of choosing between productivity growth or job growth.
You need the productivity growth because it's the only way in which incomes are going to grow, but you need a lot more job growth. And it can be achieved because that's what East Asia, several East Asian economies did. In fact, for 40 years, growth of above 8% for 40 years, allowing for both productivity growth to be healthy and strong, and very significant job growth keeping pace with the growth in the working age population. It can be achieved in India. One of the reasons why it can be achieved is that there's wide disparity within India itself. There's tremendous divergence within India between the states that are doing well and the states that are lagging. And there must be ways of closing that divergence, achieving convergence within India. That itself will boost growth. Second, this huge opportunity to free up a large part of the population that is still stuck in low productivity activity in the rural sector. It's not as if people want to be stuck with low incomes. It requires major policy shift, major reform, and innovation in agriculture, and it can be achieved. Those are two very important reasons why we can aim for higher growth in India. And the soon-to-be implemented simplification of labor laws will also help greatly, because the labor laws effectively have been anti-job. They have kept a large part of the population in the informal sector and in very small firms, and India has been unable to achieve the scale economies required for both productivity growth and job growth to be higher. You can only achieve these ambitions with a strong focus on export-oriented manufacturing, a much stronger focus than there is today. And with a strong focus not just on jobs for the highly skilled, like those in the IT sector, but a strong focus on those who come in with low skills or come in with a moderate amount of skills. Because manufacturing has a way of taking in unskilled people and making them semi-skilled. And it's got a way of taking in semi-skilled people and making them more highly skilled over time. It has a ladder of skills. India has to use the opportunities in global markets to create many more jobs for the unskilled and the semi-skilled. And those opportunities are still plentiful. Don't believe those who say globalization is in retreat. It may no longer be expanding the way it used to be. You may not be getting that hyper pace of expansion, but the level of exports and imports today in goods of many forms is higher, much higher than it was 20 years ago. It may be stabilizing, but it's a huge market of opportunity for India. And it means being willing to specialize in what India is good at, going for an openness in trade and investment by local firms, investment by foreign direct investors. Openness really counts, because then you get the cheapest and best inputs, and you can be a competitive supplier to the world. It's what Germany does, for instance. A large manufacturing economy. They specialize. They specialize in components in which they have a dominating presence globally. They rely on inputs from the rest of the world, and they specialize in components which the rest of the world needs. It doesn't mean producing a whole product. It means specializing in critical components and having that pricing ability. India's success, already seen now in electronics, in vaccine manufacturing, shows the way forward. The PLI scheme, the Production-Linked Incentive Scheme, is working well, and it has to be expanded with a special focus on labor-intensive industries. This can work for India. India can achieve. It can achieve and can become a leading export manufacturing nation. Agriculture is critical. We have to create better jobs in agriculture. And we know what the reforms required are. And it will require more R&D in higher yield crops, weather-resistant crops, and so on. But it's also very important in addressing the water crisis, because agriculture in India is taking a very large toll on water.
90% of all freshwater use in India is in agriculture. Globally, it's about 70% or close to 70%. 90% of all freshwater use is in agriculture. We need a far more efficient system of water use, precision irrigation, innovations that can improve soil quality. These are innovations that exist and need to be scaled up across the Indian agricultural sector. And it will raise incomes and free up people to move into urban areas for other types of jobs, including higher productivity jobs. And I want to also say that whilst the digital economy offers significant prospects for India in the next decade, 2 decades, perhaps 3 or 4 decades, because the world needs more software, and India's got an abundance of scientists and engineers and software developers who are good at this, that will still be a very small fraction of the workforce. It's a very small fraction of the workforce. We have to think of other services that can generate jobs. And tourism in India and the craft economy offer significant potential as well. India is still not tapping its full potential for tourism. It's a remarkable country to visit for people from anywhere in the world. I mean, natural attractions like Kaziranga in Assam, or Kutch in Gujarat, or Kumarakom in Kerala, diverse natural attractions, historic sites like Kushinagar in UP, Kumbakonam in Tamil Nadu, many sites, many experiences. I've just given you 5 or 6 examples, and I was only using those starting with the letter K. So you can imagine if I was to take the whole alphabet. It's a land of diversity, richness, and depth of historical heritage. Still not fully tapped. But likewise, the craft economy. There's a multitude of villages around India where you have craftspersons, men and women, weaving, doing pottery, doing craft of various forms. Some of them are farmers who spend part of their time doing this. It's a huge opportunity for developing non-farm incomes in India. That combination of tourism and developing the craft economy, unique, differentiated products all over India. And I just wanted to highlight that opportunity. Finally, let me move to inclusivity, which underpins everything else. We must address the challenge of child stunting soon. It's still a major challenge. Almost 40% of Indian children are stunted. We know the causes: malnutrition, poor diets when young. Again, there's reason for optimism because the recent programs that have been introduced are working well. Poshan Abhiyan, started in some states, has been working well, significant improvements in maternal health. And the recently launched Nutrition Smart Village initiative, which has to be scaled up across the country, offers promise, harnessing traditional recipes to give people better diets. But it's such an important investment. There's no public investment with higher long-term return than eradicating childhood stunting. Next, education. The new economic policy has been launched. It's extremely important. And basically, if I had to summarize what has to be done, there have been improvements in school enrollment, girls and boys, but quality is a big issue. Learning outcomes are a big issue. We know the evidence. Pradham is a major NGO that does very careful assessment of learning outcomes at different levels. Essentially, at Standard 5, almost 50% of the kids are unable to achieve Standard 2 levels of literacy and numeracy. And once you've been set back at that level, it's not easy to catch up. So we have to improve quality in our schools as a major objective. And again, here there's reason for optimism because Niti Aayog has been doing these educational quality index studies. And they find again
that some places are improving much faster than others, including in the large states. Even amongst large states, some have been moving much faster than others in recent years. And the source of improvement is improved governance of education, how teachers are selected, how school leaders are appointed. It's governance. A public school system can achieve quality. I say this coming from Singapore because we have a very highly regarded education system. It's a public school system. None of the countries in the upper band of the annual PISA rankings, or once in 2-year PISA rankings, none of them have decentralized school systems. They all have public school systems or school systems that are coordinated by the public sector. And as India's enrollments have gone up, with a large increase in enrollments in the public schools, it is critical that we bring quality into the public school system. And finally, higher education needs reform. The Prime Minister just spoke about this recently again. Like many other countries in the world, and like China, in fact, India's higher education system has been overly academically oriented. And it just hasn't prepared the vast majority of graduates for the working world. The large corporations take some of them in and then they put them through an additional year of training just to make them ready for work. But higher education has to have a stronger applied and skills orientation. And we need to follow that up through the years once people are in their career. Skills centers and skills-oriented universities are critical. I just came from one in Assam because at the suggestion of the Prime Minister, Singapore has been collaborating with the Assam state government to set up a skills center. These are all doable directions. We can achieve it. Reform education, improve governance, focus on skills. Let me conclude by saying something of a broader nature. I was listening recently to an outstanding musical performance by 3 of India's most accomplished classical musicians, Zakir Hussain, Kala Ramnath, Jayanti Kumaresh, tabla, violin, veena. Traditions of both the North and South. The 3 of them came together. And they've been performing across the United States to full crowds. In fact, they're going to be performing in Singapore in a few weeks' time, and I will be there together with my wife. Now, they decided to call themselves, for the purpose of these performances, Triveni. Triveni named after Triveni Sangam, the mythical confluence of rivers, Ganga, Yamuna, and Saraswati. So they call themselves Triveni. And I was just listening to them, and I realized this was an unusual confluence, because it was not just about their individual genius, and they are musical geniuses, each of them. Each of them are geniuses. But it was not just the individual genius. As you listen to a performance of that nature, it's all about improvisation, as you know. Each of them listening to the other, teasing them a little bit, prompting them, taking over, co-creating and co-empowering. That's what it's about. It's a collective genius. India has no lack of individual top talents. It may be overrepresented internationally. But what it has to develop is that collective capability, co-empowerment, co-creation, and having a high degree of trust amongst each other. And that has to be the challenge, co-empowerment and co-creation between the government and the private sector, together with NGOs, cooperatives, and people themselves, co-creation and co-empowerment between the center and the states and the panchayats, both at the district and the village level, and co-empowerment amongst people themselves, across caste, across class, across faiths, across white and blue collar, across gender, girls and boys, mothers and fathers.
develop this collective capability for the next 25 years. That is India's promise. And if India succeeds, as I believe it will be not just uplifting 1/5 of the world's population, it will also be showing the way for many others. Thank you very much. I thank Honorable Senior Minister from Singapore, Sri Tharman Shanmugaratnam, for this comprehensive inaugural lecture on India's journey towards growth with inclusivity and inclusivity with growth. अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें। नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए अपूरणीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आबा जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। आज भारत के विकास की जो गति है, जापान के सहयोग से हमारे यहाँ जो कार्य हो रहे हैं, इनके जरिए शिंजो आबे जी भारत के जनमन में सालों तक बसे रहेंगे। मैं एक बार फिर दुखी मन से मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज का ये आयोजन मेरे और एक घनिष्ठ मित्र अरुण जेटली जी को समर्पित है। बीतों दिनों को याद करते हैं तो उनकी बहुत सारी बातें, उनसे जुड़े बहुत से वाक्य स्वाभाविक रूप से याद आते हैं। और यहां बहुत सारे उनके पुराने साथी मैं देख रहा हूं। उनकी ऑरेटरी हम सब उसके कायल थे, और उनके वन लाइनर लंबे अरसे तक हवा में गूंजते रहते थे। उनका व्यक्तित्व विविधता से भरा था और उनका स्वभाव सर्वमित्र वाला था। यहां जितने भी लोग दिखते हैं, हर एक की अलग अलग दुनिया है, लेकिन सब अरुण के मित्र थे। ये अरुण के सर्वमित्र की विशेषता थी। और उनके व्यक्तित्व की इस खूबी को सभी आज भी याद करते हैं और हर कोई अरुण की कमी महसूस करता है। मैं अरुण जेटली जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, अरुण जी की स्मृति में इस लेक्चर का जो विषय रखा गया है, ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी थ्रू ग्रोथ, वो सरकार की डेवलपमेंट पॉलिसी का मूल मंत्र है।
मैं थर्मन जी का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और मैंने कई बार उनको सुना भी है, उनको मैं पढ़ता भी रहता हूं। उनकी बातों में, उनके अध्ययन में, वो सिर्फ भारत में ही बोलते हैं तब नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी जब जाते हैं तो काफी रिसर्च करते हैं। लोकल टच उनकी हर एकेडमिक थिंकिंग में, उनकी फिलॉसफी में बहुत सटीक तरीके से वो उसको नीट करते हैं। आज भी हम सब ने अनुभव किया, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने वैश्विक परिस्थिति से लेकर के हमारे देश के बच्चों तक हमें ले आए। मैं उनका बहुत आभारी हूं, उन्होंने समय निकाला। साथियों, जिस विषय पे यहां चर्चा हो रही है, जिस विषय को लेकर के आज अरुण जेटली व्याख्यान माला का हमारा प्रारंभ हुआ है, अगर मैं इसी को सरल भाषा में कहूं तो एक प्रकार से ये थीम, मेरी सीधी सादी भाषा में मैं कहूंगा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन इसके साथ ही इस लेक्चर की थीम आज के पॉलिसी मेकर्स के सामने आ रही चुनौतियां और दुविधाओं को भी कैप्चर करती है। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या बिना इंक्लूजन के सही ग्रोथ संभव है? आप अपने आप को पूछिए, क्या बिना ग्रोथ के इंक्लूजन के बारे में सोचा भी जा सकता है? क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर मुझे 20 साल से भी अधिक समय से काम करने का अवसर मिला है और मेरे अनुभवों का सार यही है कि बिना इंक्लूजन के रियल ग्रोथ संभव ही नहीं है और बिना ग्रोथ के इंक्लूजन का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सकता। और इसलिए हमने ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी का रास्ता अपनाया, सबके समावेश का प्रयास किया। बीते 8 वर्षों में भारत ने इंक्लूजन के लिए जिस स्पीड के साथ काम किया है, जिस स्केल पर काम किया है, वैसा उदाहरण आपको पूरी दुनिया में कभी भी नहीं मिलेगा। बीते 8 साल में भारत ने 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। 9 करोड़। ये संख्या साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, इसकी सारी आबादी को भी जोड़ दें तो उससे भी ज्यादा होती है। यानी आप स्केल देखिए, बीते 8 साल में भारत ने 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाकर गरीबों को दिए हैं। थर्मन जी ने इसका बड़ा पैशन होकर के उल्लेख किया। यह संख्या साउथ कोरिया की कुल आबादी के 2 गुने से भी ज्यादा है। बीते 8 साल में भारत ने 45 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खोले हैं। यह संख्या भी जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, मैक्सिको, इनकी टोटल पॉपुलेशन से भी करीब करीब उसके बराबर है। बीते 8 साल में भारत ने गरीबों को 3 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। और मुझे याद है, एक बार आप ही के मंत्रिपरिषद के साथ ही ईश्वरन से मेरी बात हो रही थी, सिंगापुर के मिनिस्टर। जब मैं उनको ये स्केल बताता था हाउसिंग का, तो ईश्वरन ने मुझे कहा, तो आपको तो हर महीने एक नया सिंगापुर बनाना पड़ेगा। मैं आपको ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी थ्रू ग्रोथ का एक और उदाहरण देना चाहता हूं। भारत में कुछ साल पहले हमने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी,
जिसका उल्लेख थर्मन जी ने किया, और आने वाले प्रमुख सेक्टर में उन्होंने हेल्थ सेक्टर की चर्चा भी की है। इस योजना की वजह से 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को अच्छे से अच्छे अस्पताल में और हिंदुस्तान में कहीं भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। बीते 4 साल में आयुष्मान भारत की वजह से देश के 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है। हमने इस योजना में इंक्लूजन पर फोकस किया। गरीब से गरीब जो है, आखिर की पंक्ति में बैठा हुआ है, उसको भी आरोग्य के संबंध में आवश्यक अच्छी सुविधा मिले। और समय के साथ हमने देखा है, वो पहलू तो इंक्लूजन का है, लेकिन समय ने बताया है कि इससे ग्रोथ का रास्ता भी बनता चला गया। जो पहले एक्सक्लूडेड थे वो विकास की मुख्य धारा से जुड़े, तो डिमांड भी बढ़ी और ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी का भी विस्तार हुआ। जब भारत की 1/3 आबादी जो पहले बेहतर हेल्थ केयर की सुविधाओं से दूर थी, उसे इलाज की सुविधा मिली, तो इसका सीधा प्रभाव यह हुआ कि हेल्थ केयर कैपेसिटी को उसी हिसाब से खुद को मजबूत करना पड़ा। मैं आपको बताता हूं कि आयुष्मान भारत योजना ने कैसे पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। 2014 से पहले हमारे देश का औसत था, एवरेज 10 साल में करीब 50 मेडिकल कॉलेज बना करते थे। 10 साल में 50 मेडिकल कॉलेज, इतने बड़े देश में। जबकि भारत में पिछले 7-8 साल में पहले के मुकाबले 4 गुना से ज्यादा, यानी करीब करीब 209 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कहां 50 और कहां 209। और आने वाले अभी 10 साल का जब हिसाब लगाऊंगा तो ये मामला और आगे बढ़ने वाला है, वो 400 तक पहुंचने वाला है। बीते 7-8 साल में भारत में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स में 75% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में अब एनुअल टोटल मेडिकल सीट्स की संख्या बढ़कर लगभग 2 गुना हो चुकी है। यानी अब देश को कहीं ज्यादा डॉक्टर मिल रहे हैं, देश में तेजी से आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है। इंक्लूसिवनेस के लिए लाई गई एक योजना का जमीन पर ग्रोथ की दृष्टि से भी इतना बड़ा प्रभाव हम बिल्कुल देख सकते हैं, हम उसको आंक सकते हैं। और मैं तो आपको ऐसी दर्जनों योजना गिना सकता हूं। भारत के डिजिटल इंडिया अभियान ने, जिसका उल्लेख भी थर्मन जी ने किया, लगभग 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स ने गांव में रहने वाले गरीब तक भी इंटरनेट की ताकत को पहुंचाया है। भारत के भीम यूपीआई ने करोड़ों गरीबों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा से जोड़ा है। भारत की स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी वाले साथियों को बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने का अवसर दिया है। जो हमारे यहां नगर पालिका में, महानगर पालिका में जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, जिनके साथ हमारा रोज का नाता होता है, बैंक मैनेजर होगा, उसके घर में रोज रेहड़ी पटरी वाला माल देता होगा, लेकिन उसको बैंक में जगह नहीं होगी। यह हाल था। आज हमने इसको जोड़ दिया है। उसी प्रकार से भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है। दुनिया उस पर काफी कुछ इन दिनों जो अर्थशास्त्री लोग हैं वो लिख भी रहे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां उसका रेटिंग भी कर रहे हैं। भारत का एक इनिशिएटिव है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देश के 100 से ज्यादा जिलों में रहने वाले
करोड़ों साथियों को अपलिफ्ट कर रहा है। और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कल्पना ये है कि हिंदुस्तान के और जिलों की तुलना में जो पीछे रह गए हैं उनकी आकांक्षाओं को हम एड्रेस करें, उनको उस राज्य की टॉप पोजीशन की बराबरी तक ले आए और फिर धीरे धीरे उसको नेशनल टॉप की बराबरी तक ले आए। साथियों, इसका इतना बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है और एक प्रकार से इन 100 डिस्ट्रिक्ट का इंक्लूजन हो रहा है डेवलपमेंट की दुनिया में। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है और शिक्षा पर भी थर्मन जी ने काफी बल दिया अपनी बातचीत में। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में, मदर टंग में पढ़ाई पर जोर दे रही है। जो अंग्रेजी नहीं जानता, जो एक्सक्लूडेड है, उसे अब मातृभाषा में पढ़कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भारत की उड़ान योजना, इसने देश के, हमने कई हवाई पट्टियों को जीवंत कर दिया, नए एयरपोर्ट बनाए, दूर दूर टियर 2, टियर 3 सिटी में भी हम चले गए और उड़ान योजना लाए। एक फिक्स अमाउंट में हवाई जहाज में सफर की एक रचना की। भारत की उड़ान योजना ने देश के अलग अलग कोनों को हवाई मार्ग से जोड़ा है, गरीब को भी हवाई जहाज में उड़ने का हौसला दिया है। और मैं कहता था हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज में बैठेगा। यानी इंक्लूजन भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, उसी का परिणाम है। आज भारत के में एविएशन सेक्टर का ग्रोथ इतना हो रहा है, 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर बुक हुए हैं भारत के लिए। इस देश में 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट खरीदा, क्योंकि पैसेंजर वाला इंक्लूजन का जो हमारा अप्रोच रहा, उसी का परिणाम है। अभी थर्मन जी ने जिसकी बात की, जो मैं गुजरात में जिसको मैंने बहुत मुखरता से काम किया था, जल जीवन मिशन, देश के हर घर को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ रहा है, नल से जल। और उस सिर्फ वो पानी मिलता है नहीं, वो उसका समय बचाता है, कठिनाइयां बचाता है, हेल्दी कंडीशन के लिए वाटर की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। उन सारे दृष्टि से ये मिशन बहुत बड़ा सामाजिक जीवन, और जिन्होंने बच्चों के न्यूट्रिशन का विषय किया, उसका संबंध पानी से भी है। शुद्ध पानी, पीने का शुद्ध पानी, ये भी न्यूट्रिशन के लिए, बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और हमारा नल से जल अभियान उस इश्यू को भी एड्रेस करने वाला का एक बड़ा महाअभियान का हिस्सा है। सिर्फ 3 साल में ही इस मिशन ने 6 करोड़ से ज्यादा घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा है। भारत में मोटे तौर पर लगाया हिसाब तो 25-27 करोड़ घर है, उसमें से 6 करोड़ घरों को पानी पहुंचा दिया है जी। ये इंक्लूसिवनेस आज देश के सामान्य मानवी का जीवन आसान कर रही है, उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही है। और किसी भी देश के विकास में इसका कितना महत्व है, ये आप अर्थ जगत के लोग जो यहां बैठे हैं वो भली भांति इस बात को जानते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। आप भी जानते हैं, और ये तो मैंने देखा है कि यूएन में भी इसकी चर्चा होती है, एसडीजी में भी उसकी डेवलपमेंट गोल के अंदर इन मुद्दों पर चर्चा होती है। और वो कह रहा है, दुनिया में दशकों से अनेक देशों में प्रॉपर्टी राइट्स ये बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। और जब प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं, तब समाज के जो आखिरी लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होता है, सबसे ज्यादा मुसीबतें उनको झेलनी पड़ती है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत ने इस दिशा में जिस तेजी से काम किया है वो अभूतपूर्व है। और मैं मानता हूं दुनिया के एकेडमिशियंस, दुनिया के इकोनॉमिस्ट इस विषय को अध्ययन करेंगे और दुनिया के सामने इस विषय को प्रस्तुत करेंगे कि स्वामित्व योजना के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्र में
घरों और इमारतों की मैपिंग का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। अभी तक भारत के 1.5 लाख गांवों में ये काम हम ड्रोन की मदद से करते हैं। ड्रोन से सर्वे होता है और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग होता है और पूरा गांव वहां मौजूद रहता है जब ये सारी प्रोसेस होती है तब। और 1.5 लाख से अधिक कामों में ड्रोन से ये सर्वे पूरा किया जा चुका है और 37,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप कल्पना करिए, ड्रोन के माध्यम से 37,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन की मैपिंग का काम हो चुका है, मतलब उन घरों से जुड़ी हुई जमीन वाला। और 80 लाख से ज्यादा लोगों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं और ये भी जो मालिक है उसकी सहमति से होता है, उसके साथ विचार विमर्श होता है, उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ विचार विमर्श होता है। एक लंबी प्रक्रिया है और इसका मतलब यह हुआ कि इससे गांव के लोगों को बैंक लोन मिलना आसान हुआ है, उनकी जमीन अब कानूनी विवादों से भी बच रही है। साथियों, आज का भारत रिफॉर्म्स बाय कंपल्सन के बजाय रिफॉर्म्स बाय कन्विक्शन से आने वाले 25 साल का रोड मैप तैयार कर रहा है। देश आजादी के 100 साल मनाएंगे तब देश कहां होगा, इस लक्ष्य को लेकर के हम आज रोड मैप बना करके आगे बढ़ रहे हैं। दशकों पहले देश ने ये देखा था कि जब कोई रिफॉर्म मजबूरी में होता है तो उसके इंस्टीट्यूशनलाइज होने की उम्मीद कम रहती है। जैसे ही मजबूरी खत्म होती है वैसे ही रिफॉर्म भी बुला दिया जाता है। रिफॉर्म जितने जरूरी होते हैं उतना ही जरूरी वो एनवायरनमेंट होता है, मोटिवेशन होता है। पहले भारत में बड़े रिफॉर्म तभी हुए जब पहले की सरकारों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। हम रिफॉर्म्स को नेसेसरी इविल के रूप में नहीं बल्कि एक विन विन चॉइस के रूप में मानते हैं, जिसमें राष्ट्रहित भी है, जनहित भी है। इसलिए बीते 8 सालों में हमने जो भी रिफॉर्म्स किए उन्होंने नए रिफॉर्म्स के लिए रास्ते तैयार किए हैं। अरुण जी आज यहां भी जहां भी होंगे वो संतुष्ट होंगे कि वो जिस मिशन में भागीदार रहे उसका लाभ आज देश को मिल रहा है। जीएसटी हो या आईबीसी, इनको लेकर सालों तक चर्चा हुई, आज इनकी सफलता हमारे सामने है। कंपनीज एक्ट को डिक्रिमिनलाइज करना हो, कॉर्पोरेट टैक्सेस को कॉम्पिटिटिव बनाना हो, स्पेस, कोल माइनिंग और एटॉमिक सेक्टर्स में को खोलना हो, ऐसे अनेक रिफॉर्म आज 21वीं सदी के भारत की सच्चाई है। साथियों, हमारी पॉलिसी मेकिंग पल्स ऑफ द पीपल पर आधारित है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनते हैं, उनकी आवश्यकता, उनकी आकांक्षाओं को समझते हैं। इसलिए हमने पॉलिसी को पॉपुलिस्ट इंपल्सिस के दबाव में नहीं आने दिया। पीपल्स पल्स के अनुसार फैसले लेना और पॉपुलिज्म के सामने हथियार डाल देने में क्या फर्क होता है, ये कोविड काल में हिंदुस्तान ने देखा है और देखा है नहीं, दुनिया को दिखाया है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री क्या कह रहे थे पैंडेमिक के समय? जब पैंडेमिक आई तो पूरी दुनिया में बड़े बेल आउट पैकेज के लिए, डिमांड ड्रिवन रिकवरी के लिए पॉपुलिस्ट इंपल्स था, हम पर भी दबाव था और हमारी आलोचना होती थी, ये कुछ कर नहीं रहे, कुछ दे नहीं रहे, पता नहीं क्या कुछ हमारे लिए कहा गया। ये भी कहा गया कि लोग चाहते हैं, एक्सपर्ट ये चाहते हैं, बड़े बड़े विद्वान ये चाहते हैं, लेकिन भारत दबाव में नहीं आया। उसने एक अलग अप्रोच अपनाई और बहुत समझदारी के साथ शांत मन से अपनाई। हमने पीपल फर्स्ट अप्रोच के साथ गरीब को सुरक्षा दी,
महिलाओं, किसानों, एमएसएमई पर ध्यान दिया। हमने दुनिया से अलग इसलिए कर पाए क्योंकि हमें पीपल्स पल्स यानी जनता क्या चाहती है, उसकी क्या चिंता है, इसका एहसास है। इसलिए भारत की रिकवरी और बाकी दुनिया की रिकवरी में जो फर्क है वो हम साफ देख सकते हैं। साथियों, मैं अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का आग्रह करता रहा हूं। हमारी सरकार ने ऐसे 1,500 कानूनों को खत्म कर दिया है जो लोगों के जीवन में अनावश्यक रूप में दखल दे रहे थे। 1,500 कानून। और मुझे याद है 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम कैंडिडेट बनाया था, 2014 में चुनाव होना था, तो यही दिल्ली में ही व्यापार जगत के लोगों ने मुझे कार्यक्रम के लिए बुलाया था और वो बड़ी थोड़ा गर्म मिजाज का वातावरण था। क्या करोगे, डिकना करोगे, फलाना करोगे, सब पूछ रहे थे। ये कानून बनाओगे, नहीं कानून बनाओगे, ऐसा बड़ा दबाव था। कैंडिडेट था चुनाव के दिनों में, हम भी तो जरा मैंने कहा देखिए आप कानून बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूं, मैं हर दिन एक कानून खत्म करूंगा। नए बनाने की गारंटी नहीं देता हूं, खत्म करूंगा। और पहले 5 साल में 1,500 कानून खत्म करने का काम पूरा कर दिया साथियों, जो कानून जनता सामान्य पर बोझ बनते हैं। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, हमारी सरकार ने 30,000 से ज्यादा, यानी आंकड़ा भी आप चौंक जाएंगे जी, 30,000 से ज्यादा ऐसे कंप्लायंसेस को भी कम कर दिया है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और ईज ऑफ लिविंग में बाधा बने हुए थे। 30,000 कंप्लायंसेस खत्म कर देना यानी जनता जनार्दन पर कितना अभूतपूर्व विश्वास का युग आया है, उसका नतीजा होता है कि हम कंप्लायंसेस के बोझ से जनता को मुक्त कर रहे हैं। और मैंने लाल किले पर से कहा था कि मैं चाहता हूं सरकार लोगों की जिंदगी से जितनी बाहर चली जाए हमें निकालनी है। लोगों की जिंदगी में सरकार 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 का प्रभाव कम से कम हो, लेकिन जिसको सरकार की जरूरत है उसको सरकार का अभाव न हो, ये दोनों विषय को लेकर के चलने का हमने प्रयास किया है। आज मुझे आपको ये बताते हुए संतोष है कि मिनिमम गवर्नमेंट की अप्रोच मैक्सिमम आउटपुट्स और मैक्सिमम आउटकम्स भी दे रही है। हम बहुत तेजी के साथ अपनी कैपेसिटी का विस्तार कर रहे हैं और इसके नतीजे आपके सामने हैं। कोविड वैक्सीन का ही उदाहरण ले, हमारे देश के प्राइवेट प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन उनके पीछे पार्टनर इन प्रोग्रेस के रूप में सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी रही थी। वायरस आइसोलेशन से लेकर स्पीडी ट्रायल तक, फंडिंग से लेकर रैपिड रोल आउट तक जो कंपनियां वैक्सीन का निर्माण कर रही थी उन्हें सरकार का भरपूर सहयोग मिला। एक और उदाहरण हमारे स्पेस इकोसिस्टम का है। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे विश्वसनीय और अत्याधुनिक स्पेस सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। इस क्षेत्र में भी हमारा प्राइवेट सेक्टर इकोसिस्टम बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन उनके पीछे भी पार्टनर इन प्रोग्रेस के रूप में सरकार की पूरी शक्ति है जो उन्हें हर सुविधा और जानकारी उपलब्ध करने में मदद कर रही है। जब हम भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का उदाहरण लेते हैं तो हमारे यहां फिनटेक के साथ ही डिजिटल पेमेंट से जुड़े कई प्लेयर्स हैं, लेकिन यहां भी देखें तो इनके पीछे जेम ट्रिनिटी, रुपे, यूपीआई और सपोर्टिव पॉलिसीज का मजबूत आधार है। यहां मैंने केवल कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं, लेकिन मैं इन्हें दुनिया के लिए एक रिसर्च का विषय मानता हूं, एकेडमिक वर्ल्ड को गहराई में जाने के लिए निमंत्रण देता हूं,
दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट को मैं निमंत्रित करता हूं, आइए उसकी बारीकियों को देखिए। इस विशाल देश, अनेक विविध आवश्यकताएं, उन सब के बावजूद भी हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रकार से देखें तो अब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर या सरकारी वर्चस्व वाले एक्सट्रीम मॉडल्स की बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब समय है कि सरकार की प्राइवेट सेक्टर को पार्टनर इन प्रोग्रेस मानकर उन्हें प्रोत्साहित करें और हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, सबको साथ लेकर चलने, देश के पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स पर भरोसा करने की यही स्पिरिट है जिसके कारण आज भारत में ग्रोथ के लिए अद्भुत उत्साह दिख रहा है। आज हमारा एक्सपोर्ट नए रिकॉर्ड बना रहा है, सर्विस सेक्टर भी तेजी से ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। पीएलआई स्कीम का असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दिखने लगा है। मोबाइल फोन सहित पूरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई गुना वृद्धि हुई है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब मैं इस कोरोना कालखंड में टॉय को लेकर के मैंने समिट की थी, खिलौने, तो कई लोगों को लगा हो गया ये पीएम को कभी झाड़ू की बात करता है, स्वच्छता की बात करता है, टॉयलेट की बात कर रहा है, टॉय की बात कर रहा है। कईयों को, क्योंकि अब तक हम उन बड़ी बड़ी बातों में फंसे रहे हैं तो मेरी बातें उनके गले बैठती नहीं थी। सिर्फ खिलौनों के ऊपर मैंने ध्यान दिया, खिलौने बनाने वालों पर ध्यान केंद्रित किया, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया, इनोवेशन पर ध्यान दिया, फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ ध्यान दिया। अभी तो 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। मेरे देशवासी गर्व करेंगे कि टॉयज का इंपोर्ट इतने कम समय में इतना घट गया, वरना हमारे यहां हर घर में खिलौना विदेशी हुआ करता था जी। वो इतना इंपोर्ट कम हुआ है। इतना ही नहीं, भारत के खिलौने, भारत के टॉय पहले जितना इंपोर्ट होता था उससे ज्यादा आज एक्सपोर्ट होने लग गए हैं। यानी कितना बड़ा पोटेंशियल अनटैप था। जैसे आपने कहा टूरिज्म, सचमुच में मैं सहमत हूं आपसे। भारत के टूरिज्म की संभावना इतनी अपार है, लेकिन हम एक ही जगह पे अटक गए थे। हिंदुस्तान के पूर्ण रूप में विश्व के सामने ले जाने का हम पता नहीं, हमारी मानसिकता ही वो खो चुकी थी। और मैं तो विदेश के मेहमान जो भी आते हैं तो हिंदुस्तान के किसी न किसी स्थान पर ले जाने का आग्रह रखता हूं। क्या मेरे टूरिज्म को, इस बार हमने योगा का कार्यक्रम किया तो 75 आइकॉनिक स्थान पर किया ताकि लोगों को पता चले कि टूरिज्म के ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन है हमारे यहां। टूरिज्म की संभावनाएं, आपने सही फरमाया, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है भारत। साथियों, हमारी डिजिटल इकोनॉमी भी तेजी से आगे बढ़ रही है। फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। यानी हमारे ग्रोथ इंजन से जुड़ा हर सेक्टर आज पूरी क्षमता से चल रहा है। साथियों, आजादी का यह अमृतकाल भारत के लिए अनगिनत नए अवसर लेकर आ रहा है। हमारा निश्चय पक्का है, हमारा इरादा अटल है। मुझे विश्वास है हम अपने संकल्पों को सिद्ध करेंगे, 21वीं सदी में उस ऊंचाई को प्राप्त करेंगे जिसका भारत हकदार है। और जैसा थर्मन जी कुछ चैलेंजेस के लिए बता रहे थे, मैं मानता हूं चुनौतियां हैं, लेकिन अगर चुनौतियां हैं तो 130 करोड़ सॉल्यूशन भी है। ये मेरा विश्वास है। और उन विश्वास को लेकर के, चुनौतियों को ही चुनौती देकर के आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए हमें इंक्लूजन का रास्ता लिया है और उसी रास्ते से ग्रोथ को भी पाने का इरादा रखा है। एक बार फिर अरुण जी को याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थर्मन जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके इस प्रेरणादायक संबोधन के लिए धन्यवाद करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी से और सीनियर मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर और अन्य मंत्रीगण से अनुरोध करूंगा कि वो ऑडियंस में अपना स्थान लें. I request all the dignitaries on the dais to take their place among the audience. With the context set by Senior Minister, Honorable Shri Shanmugaratnam, on the theme of today's lecture and an inspirational address by Honorable Prime Minister, now is the time for a brief discussion, and we have with us Shri N.K. Singh, Shri Arvind Panagaria, and Shri Matthias Corman. I will request all three of them to take their seats on the dais. Shri N.K. Singh, as we are all aware, is a prominent Indian economist, former chairman of Finance Commission, and president of Institute of Economic Growth. Shri Arvind Panagaria is a prominent Indian-American economist, published author, and has served as the first vice chairman of Niti Aayog. Shri Matthias Corman is a distinguished diplomat who currently serves as Secretary General of Organization for Economic Cooperation and Development. Over to the panelists to take us through the panel discussion. Thank you very much. I'm indeed privileged and honored for this opportunity for moderating a brief panel discussion after the far-reaching address of the senior minister, embellished by the Prime Minister's visionary address. So, looking at what Senior Minister said, I'm first going to request the two distinguished panelists who have already been introduced to make their brief introductory remarks in the context of the broad theme outlined by the Senior Minister and in many ways given an Indian dimension. I request them to make their intervention brief so that we are also able to have a Q&A a little after that, and the time will be adequate. So first, can I request you, Matthias, and you have already been introduced, but may I just add that you were indeed one of the personal friends of Mr. Jaitley, and there was a common passion which you shared, the passion for cricket, coming as you do from Australia. So, Matthias. Thank you very much, NK. It's a pretty hard act to follow after Senior Minister Tharman and indeed after Prime Minister Modi. But look, it's a great privilege to be here. It's great to see Finance Minister Nirmala Sitharaman and of course Madam Jaitley and friends of family and friends of Aaron. It is an honor to be offered the opportunity to say just a few words on the occasion of this inaugural Aaron Jaitley lecture. I admired Aaron greatly. Yes, of course, in terms of what he achieved as finance minister, and I think Tharman would agree that among finance ministers, Aaron Jaitley was like a global rock star. But more importantly, for me, I admired Aaron Jaitley because of who he was and because of the incredible richness of the life he lived. Throughout his life, Aaron was a man of great courage, of great moral integrity, and indeed of
great generosity, including to me. And so I'm so pleased that you have established this memorial lecture in his honor, and I'm so pleased that you have chosen such a distinguished leader in Tharman to give the inaugural lecture. Under Prime Minister Modi's leadership, Aaron steered India's fiscal and structural modernization and reform agenda. He secured, as has been mentioned, major tax reform with the implementation of a national goods and services tax, replacing a multitude of indirect national and state taxes. He pursued a series of other reforms, but Aaron was a strong voice for India on the world stage, and from the OECD's point of view, from the point of view of the Organization for Economic Cooperation and Development, we benefited greatly from our collaboration with him. In particular, he worked with us on international tax reform, with India formally joining the OECD G20 initiated convention to prevent base erosion and profit shifting. Moving through things quickly, as I've been asked by my friend NK to do. Aaron, and as has been touched on by Tharman, had a very clear understanding that to be sustainable and sustained, economic expansion had to be inclusive, that the benefits of economic development and growth had to be widely shared and had to reach the poor and the most vulnerable. But he also understood, and the Prime Minister has really honed in on this point in his address to us tonight as well, to drive inclusion and social cohesion, we need economic development and growth. And Aaron advocated for growth as a mechanism to pull as many people out of poverty as possible, to improve people's quality of life, to improve the opportunities for people to get ahead, always conscious of the need to make growth inclusive and not leave anyone behind. Equality of opportunity through better access to essential services, to education, to health, to employment, is what underpins the aspirational promise of merit-based social mobility in free democratic nations. Fully utilizing our human capital is central to driving better opportunities for all, and India has made incredible strides in this regard. 75 years on from independence, India is not only the world's largest democracy, but also a major, strongly growing, positive force in the global economy. Your strong growth, among the highest in the world over the past 2 decades, has already lifted hundreds of millions of people out of poverty, and as has been referenced, the government of India under Prime Minister Modi's leadership has of course great ambitions to keep driving strong growth, but growth which is stronger by being inclusive and sustainable. There is much work to be done in India and globally. Tharman is absolutely right. The world needs Indian leadership to help solve some of the evolving global challenges of our time. I was privileged to have the opportunity this morning to discuss this with Prime Minister Modi. The world would benefit so much from India's cooperation-driven approach to multilateralism, helping to bridge some of the current divides in the world to help solve some of the challenges and problems in front of us. As an organization committed to supporting better international cooperation, to develop better policies for better lives, we look forward to working with Prime Minister Modi and his government in the course of India's G20 presidency next year to do exactly that. And thank you for giving me the opportunity to say a few words. Thank you very much, Matthias. Thank you for being so disciplined in adhering to the somewhat limited time we have. I now request the distinguished co-panelist Arvind Pangaria to make his observations. Arvind? Thank you, NK. Let me also join everybody in saying that how privileged I feel to be here, how honored I feel. With the generosity of the Prime Minister, I got to serve alongside Jaitley ji, and all the qualities that have been described of him, I had the chance to observe those firsthand. And let me also say that I was a great beneficiary during the 3 years that I was serving in the government of the
helpful nature and all the assistance that Jetli ji was always there to give me whenever I sought his help. He never failed, absolutely never. Very quickly, just to add my own remarks here, maybe I will take one specific theme that came from the distinguished lecture. This was about the deep legacies that Mr. Shanmugaratnam mentioned. One particular deep legacy that we really inherited from the beginning, the way the Indian growth process was unfolded, had to do with very initial emphasis on heavy industry. And here I want to draw this particular, that growth is important for inclusion. That we understood. From the very early on, you go back to Congress's discussions in 1930s and all, that growth was critical. Without growth, we could not uplift people out of poverty. I think what got really missed is that the growth process itself has to be inclusive for growth to be sufficiently high that you actually achieve the inclusion that is essential. We emphasized heavy industries. Savings were very low, 7% of the GDP at the time, a very low GDP to begin with. So practically those savings got invested in 3 or 4 steel mills. Rest of the population workforce was left completely out of the benefits that could come from growth. So some growth did happen, but it was growth without inclusion, therefore it was not very high growth, 4%, 5%. And all the reforms that we have then been doing starting from 1991 and very much accelerated in the last 8 years have to do with making the growth process itself inclusive. So we have understood that health, education, etc. are essential for inclusion, but it is the growth process itself. What is the quality of growth? Does growth bring the workforce directly into economic mainstream is critical actually to achieving high growth. And this is what the East Asian economies, so if I could call this, India's model as the Nehru model versus the East Asian one as the Lee Kuan Yew model, then the Lee Kuan Yew model kind of understood this, and therefore it was driven by very much labor-intensive manufacturing growth, which brought the large part of the population into the mainstream of the growth. And so the growth itself could be actually very high, 8 to 10%. And so that, of course, gave the revenues also for the government to promote rapidly education, health, and all the other social expenditures. And so I think this is the big difference now, with the GST, with the labor law reforms that have been done, for 15 years we have been arguing for those, the economists. Finally, Prime Minister Modi has also done those labor law reforms, the corporate profit tax reform, the definitional change of all these small, medium, and micro firms, which now open up those categories much wider. All of these facts make, I think, for inclusion in the growth process, and therefore not only that would promote immediately inclusion, but it will also give rise to, in the forthcoming 25 years, significantly higher growth rates, and therefore allow us to promote inclusion yet more. So I'll stop there. Thank you. Thank you very much. Thank you, Arvind. I have this great privilege of asking 1 or 2 questions, if I might. So drawing some inspiration from the senior minister's speech and the Prime Minister's vision, particularly in converting the great challenge of the pandemic into a historic opportunity to take forward our entire reform strategy. The senior minister, you referred to an unusual confluence of challenges which the global economy faces. And these challenges which you mentioned are several. These challenges which entail national security, driven by the unusual circumstances which we have obviously compelled many nations, particularly nations in Europe, to become increasingly inward-looking. India has avoided that degree of conflict between pursuing with economic reform strategy along with ensuring
that the internal security of India and some of the important challenges do not remain under-addressed. Matthias, looking at your own experience, how would you see the symmetry between the challenge of national security and the challenge of ensuring that the forces of globalization, particularly international trade, value-added chain, comparative factor advantages, comparative costs, which are productivity enhancing, are in some ways or pursue the same common path? And I'm going to ask you, Arvind, the same question, because you keep writing brilliantly on the need to open up on the trade sector. Do you see any contradiction between the two? But first to you, Matthias. Well, the first point I would make is that while the global rules-based trading system has for some time been under pressure, and some of these pressures have come to the fore in the context of the pandemic, and also more recently in the context of the war in Ukraine, with supply chain challenges and so on. I mean, overall, our global markets continue to perform very well, and I agree with Tharman. I mean, global trade is growing, and I still believe that countries around the world doing more business with each other and increased economic integration, increased alignment of economic interests is a very powerful driver, not only of a lifting of living standards, but also of increasing stability and peace. Now, of course, I mean, there are challenges and there are things that need to be resolved, and indeed, I mean, it's important that there is a sustainable and sustained new consensus around what the rules of the game ought to be in the current global context. But the principles of countries around the world and people around the world contributing into global value chains what they can do best at the lowest possible cost, I mean, I still think is a principle that works very well. And in the context of the pandemic, while much has been said, global value chains were much more resilient than what might have been said from time to time. And if supply chains were under pressure in the latter part or in the second year of the pandemic, it was because the recovery was so strong and the composition of that strong recovery in demand was so different that the supply logistics in the context of a pandemic were finding it hard to keep up. But fundamentally, our global market is working well. There are things that need to be adjusted. And I think countries around the world doing more business with each other, investing more into each other's economies through the free flow of capital is a powerful driver for increased peace and stability. Arvind? So, let me make 2 points which have been implicitly made here. One, increased risk always requires diversification. That's true. And so today, a lot of the multinationals are looking for diversification to other countries, meaning, you know, China has been the center of their activity for last 2 decades, but now they seek diversification. That opens new opportunities. So I think every challenge comes with an opportunity. Mm-hmm. So that's the first point. But the second one is, which of course the senior minister very much expounded, that on the surface it seems that there's a lot of backlash on trade and globalization going on, that all the trade war that broke out between the United States and China. But if you actually look at the outcomes, it is remarkable how, in spite of COVID and these tensions, trade has continued to flourish. So, you know, the decline in trade during COVID year, 2020, was about 6%. And it bounced back very quickly. By the end of the last quarter of 2020, trade was back. And today, total trade is $28.5 trillion, which is 3 trillion more than the pre-COVID peak that we had observed before. So I think, you know, opportunities will remain. Economic incentives, profit incentive is just too powerful. And today, in spite of everything else, the economy is far more open than it was when Korea, Taiwan, Singapore, etc., made their rapid growth. So I will not be pessimistic. Thank you. My second question is that
one of the themes of the senior minister was the challenges of an orderly transition to an era of sustainable growth, particularly climate. You mentioned about the far-reaching contribution made by Prime Minister Mr. Modi at the Glasgow 26 when he outlined the Panchamrit, which became in some ways the mantra which guided the Glasgow 26. Let me ask you, Matthias, that considering the fact that you realize that very large capital is necessary, and considering the limits of what public outlays can do, and considering the fact that unfortunately developed countries have made enormous promises but have not followed those promises with the necessary transfer of capital, it's necessary to incentivize private capital outlays, which will be necessary to blend with public outlays for reaching those ambitious targets. How do you think the international multilateral order and lending institutions can be restructured for meeting a better partnership between enhanced public outlays with enhanced private capital flows, particularly on the issues of risk mitigation for private capital? Thank you very much for that question. Firstly, I mean, developed economies did make promises to provide and mobilize $100 billion US a year in climate finance for developing economies, and that was meant to happen by 2020. It didn't happen by 2020, but we are tracking this, and we now believe, based on the data that we have in front of us, that that goal will be reached by 2023 and then exceeded from there on in. But that's not going to be enough. I mean, we will need trillions of investment, and you're right. I mean, we will need to find ever better ways to leverage public investment, to leverage into additional private investment, and also to pursue blended finance opportunities to ensure that we can get the level of investment that is required. But what is even more important on top of this, when countries around the world, including India, have made commitments to transition to net zero emissions. Many countries by 2050, China by 2060, India by 2070. So there's now a trajectory, there's a pathway, there's a transition. And you know, the problem-solving spirits around the world, the entrepreneurial spirits around the world, have to find ways that we can achieve that transition in the best, most sensible way possible. But also, different countries around the world using different approaches, taking into account different circumstances and different opportunities. All of that needs to be somehow brought together in a globally more coherent approach, where we ensure that individual efforts in individual countries contribute to solving the actual problem that we're trying to solve. And I think that's where there is scope for better dialogue, sharing of information, sharing of data of what works best, what doesn't work so well, sharing of technology to make sure that we really give every country around the world the best possible chance to get to the ultimate destination in the best possible way, but also to avoid negative spillovers from uncoordinated action. And that is an area in which we believe the OECD, together with India and others, might be able to help. Arvind, before you respond, I'm grateful to Matthias. One of the issues which really is very troublesome is a just transition, an orderly just transition. And the resiling of developed countries from commitments made long ago necessitates obviously a more innovative approach. And perhaps you could say what those innovative approaches can be. That's a very tough one, NK. If we really know the answers to that question, he's been thinking all night about how he can ask us some tough questions. On the way to solution. But one of the things I think that should be done, if there is some will, then, you know, one of that energy efficiency provides a great avenue to bring in carbon emissions down. A lot of new technologies are coming,
but these are very high royalties to be paid. I think, we ought to use some of the climate finance provided by the foreign governments, by the richer countries, which have been responsible for much of the pollution that exists in the environment today, and use those to actually pay part of these royalties and make the technologies available to the developing countries at either lower cost or free of charge. I think that will go a long way towards solving the problem. Thank you very much. I think that I wish to now thank both the distinguished panelists for not only their valuable observations, but for making their responses. We bring this session now to a close by expressing my gratitude to both of you for having really, in many ways, genuinely sought to answer some of these complex challenges. Thank you very much. I thank Honorable Prime Minister, Senior Minister of Singapore, all the panelists, Senior Ministers of Government of India, family members, diplomats, and other dignitaries. Thank you very much for joining us on this inaugural Arun Jaitley Memorial Lecture. I'll request everybody to remain seated. First, Prime Minister will leave for the next event with the international delegates of KEC in the same building. Thereafter, international delegates of the KEC will be requested that to move to the photo session, and thereafter, then the guest can leave thereafter. Thank you. Ladies and gentlemen, everybody kindly remain seated. Requesting everybody to kindly remain seated, we would request no movement in the hall. तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे दिल्ली स्थित विज्ञान भवन पे, जहां पे पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे थे। और अब आगे बढ़ते और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं, जो कि अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। पवित्र अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम को आज शाम को बादल फटा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 8 लोगों के मरने की अभी तक पुष्टि की है। पवित्र गुफा के पास पानी के तेज बहाव में कई टेंट बह गए हैं। घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव